Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya, and in this video we are going to have a look at some basic concepts of triangle. Triangle is a very important concept of geometry, and the basic concept which we are going to learn today will be helpful to you for any after 12th aptitude based exam, जैसे any BBA entrance exam or law entrance exam or any other aptitude based exam. Any after graduation aptitude based exam, जैसे any MBA entrance exam और जहाँ पे एप्टीट्यूड पूछा जाता है एमसी एंट्रेंस एग्जाम और एनी बैंकिंग एग्जाम और लेटेस्ट से जीआरई, जीमैट, ये सब स्टडी अब्रॉड के कोर्सेज हैं। कोई भी कोर्स के लिए आप जहाँ पे एप्टीट्यूड एंड ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है वहां पे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रायंगल्स। इसके पहले ज्योमेट्री का फर्स्ट बेसिक सेशन जो लाइंस एंगल्स हुआ था वो आपको देखना बहुत जरूरी है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया आपको है, बिकॉज बिफोर दैट if you don't understand what are the lines and what is the point and what are the properties of lines, then you will not understand triangles and many properties of triangles. So what is a triangle? Triangle is any three-sided entity, three-sided closed figure which have exactly three sides and exactly three vertices. Vertices are the points where two adjacent sides of a triangle meet, and there are three angles to any triangle, which will add up to addition of all the three angles of a triangle. Addition of all the three angles of a triangle is always equal to 180 degrees. Existence property of a triangle. Let us assume this is triangle ABC with sides small a, small b and small c units. It can be centimeter, inches, millimeter, जो भी है. So for any triangle to exist, sum of any two sides of a triangle, sum of any two sides of a triangle should always be greater than the third side, greater than the third side. जैसे a plus b must be greater than third c, b plus c must be greater than a, or a plus c must be greater than b for any triangle to exist. For any triangle to exist, correct? Otherwise it won't be a triangle if the side as sum of any two sides of a triangle is equal to or less than the third side, correct? आप इसको draw करके देखो practically. Then types of triangles based on side and angles. So there are various types of triangles based on their sides and angles, जिसमें सबसे important and सबसे पहला आता है स्केलिंग ट्रायंगल, जिसकी ना कोई साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है. यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रायंगल ए बी सी नाम दे दूं एंड दीज आर देयर साइड्स ए बी सी, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. तीनों में से एक भी साइड और एक भी एंगल इक्वल नहीं है, इसको बोला जाता है स्केलिंग ट्रायंगल. ओके, देन सेकेंड टाइप इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. सेकेंड टाइप इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ पे कोई तो भी दो एडजेसेंट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एट द एंगल्स अपोजिट टू दोज equal sides are always equal. Angles opposite to those equal sides are always equal. So यहाँ पे क्या होता है, any two sides are always equal. Any two sides and angles opposite to those sides, opposite to those equal sides are always equal. Correct? And similarly, इसी का थोड़ा upgraded version है equilateral triangle, where all the three sides and all the three angles of a triangle are equal. All the three sides and all the three angles of a triangle are equal. तो जैसे ही मैंने बोला all the three angles of a triangle are equal, so if I assume this is angle measure x, angle measure x, angle measure x, I will get 3x equals to 180 degrees because measurement of all the three angles of a triangle is 180 degrees. That means each individual angle of an equilateral triangle will measure 60 degrees. Each individual angle of an equilateral triangle will measure 60 degrees. Correct? These are some very basic properties of a triangle. Now let us move forward to the some two other parts of a triangle, कि किसको क्या बोला जाता है और क्या क्या parts of a triangle are existing. So let us begin with median. Median क्या होता है? Median का definition ये होता है that a line or a segment, line segment joining
any vertex of a triangle joining any vertex and midpoint of the opposite side. For example, if I draw this triangle, so triangle ABC has three vertices A, B, and C, and three sides, namely AB, BC, and CA. If I say that point D, if I say that point D is the midpoint of side BC, and I try to join this vertex with this point D. मैंने पहले ही बोला है आपको कि I am not the artist, so मेरी lines and figures, मेरा curves के साथ बहुत अच्छा relation है, straight lines के साथ नहीं. Okay, if I say that this is line, the AD is a straight line. कैसे ड्रॉ करूं इसको? AD is a straight line. Great. Where BD equal to DC, where length BD equals to length DC. That's why D is a midpoint, and this line segment joining vertex and a midpoint of the opposite side is called as a median. And जैसे ही एक vertex बनता है तो ऐसा दूसरा vertex भी बन सकता है, and इसी तरीके से आपका तीसरा vertex भी बन सकता है. क्या गलती है इसमें? एक ट्रायंगल को तीन साइड से तीन वर्टेक्स है तो तीनों साइड्स के मिड पॉइंट एंड तीनों अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करके मैं तीन मीडियन निकाल सकता हूं. एंड फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, लेट इट बी स्केलेट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑप्टिसेंटर ट्रायंगल, all the vertices will pass through the one common point, will pass through the one common point, which is called as a median, which is called as a median. So all the 3 points, 3 lines will pass through one common point, which is called as a median, which is called as a centroid. So this point is called as a centroid. तो जैसे ही एक सेंट्रोइड आ जाता है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसकी समझना बहुत जरूरी होती है. जैसे median divides the area of a triangle in two equal parts, divides the area of a triangle in two equal parts. जैसे यहाँ पे median AD is dividing the area of triangle ABC in two equal parts. If area of triangle ABC is 100 units, then area of triangle ABD is 50 units, and area of triangle ACD is 50 units. Okay. Similarly, centroid divides the median in the ratio, centroid divides the median in the ratio 2:1. 2:1. अभी ये मीडियन को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो इसमें से 2 पार्ट सेंट्रोइड के वर्टेक्स साइड में आते हैं एंड एक पार्ट सेंट्रोइड के मीडियन मिड पॉइंट साइड में आता है. इसमें से दो कोई भी मीडियन के लिए DEF अगर मैं ऐसे नाम दूं तो कोई भी मीडियन के लिए फॉर मीडियन BE as well, if this is point G, so BG upon GE, it is something like AG upon DG is equals to BG upon EG is equals to CG upon FG is equals to 2 upon 1, is equals to 2 upon 1. Correct? Plus all these 6 triangles 1 2 3 4 5 6 will have an equal area. This is a very important point. ठीक है, ये मैं सबको नहीं बताता हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान पे रखो. All these 6 triangles which are formed the triangle 1 2 3 4 5 6 will have an equal area. So total area of triangle is also divided into 6 equal parts. Okay, then these are very important points. If you want to find out the median length of the median, there was one scientific mathematician known Apollonius. जो भाई साहब ने आपका ज्योमेट्री थोड़ा और क्रिटिकल करने के लिए उसमें और एक फॉर्मूला डाल दिया. यूजिंग द Apollonius theorem you can find out the length of the median, and this theorem is called as
AB square plus AC square is equals to 2 in bracket AD square plus BD square. ये ध्यान में रखने के लिए आप ध्यान में रखो कि कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ो, जैसे मैंने ए वर्टेक्स पकड़ा, तो ए वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाले तीन सेगमेंट से, ए बी एंड ए सी, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंड ए डी मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो दो साइड्स एक साइड में एक तरफ आ जाएंगे एंड एक मीडियन जो है वो एक तरफ आ जाएगा, लेकिन मीडियन 2:1 अकेला कैसे झगड़ेगा इनके साथ, इसीलिए जो थर्ड साइड है उसका हाफ, इसलिए जो थर्ड साइड है उसका हाफ। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये जाके ये इक्वल वेट हो जाता है, तो इनका वेट बहुत हेवी हो जाता था इसके बदले। ओके, सो दीज आर सम वेरी वेरी बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू मीडियन एंड सेंट्रोइड। मूविंग फॉरवर्ड टू द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या है ये पहले समझने के लिए हमें छोटा सा डायग्राम निकालना पड़ेगा। लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल ABC of any type. It can be scalene, isosceles or equilateral. It can be acute, obtuse or right angle. But जैसे ही मैं एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करता हूं तो I will get the height of a triangle. Why? Because you know that area of a triangle is equals to 1/2 into base into height of the triangle. तो height माने क्या? A perpendicular distance between the vertex and the opposite side. For any vertex, perpendicular distance between the vertex and the opposite side. A perpendicular distance between the vertex and the opposite side. If I name these points P, Q, and R, if I name these points P, Q, and R, then AP is the median altitude on side BC, BQ is the altitude on side AC, CR is the altitude on side BA. And here as well, all the three altitudes of a triangle will pass through only one point, which is called as an orthocenter. All the three point of intersection of all the three altitudes of a triangle is called as an orthocentre. This is a common point for any type of a triangle, irrespective of their sides and angles. ओके, ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज एंड बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, बट ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, बिकॉज इससे रिलेटेड इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। सो बच्चों, ये हो गया ऑल्टीट्यूड एंड ऑर्थोसेंटर। इसके साथ एक आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे हमने परपेंडिकुलर देख लिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, मीडियन देख लिया जो एक्चुअली अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है लेकिन अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। तो ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए जो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है अपोजिट साइड को, करेक्ट? जो परपेंडिकुलर भी है और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन आपकी यहाँ पे हर एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शुड आल्सो पास थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स। ये सब नहीं होगा, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में मत आना, ठीक है? लेट अस से दिस इज ट्रायंगल ABC। अगर मैं साइड BC का मिड पॉइंट निकालूं, लेट अस से पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड इसमें परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करूं, सो गोइंग बाय द टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इट विल नेवर पास थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स A। चलेगा, वो मेरा कंडीशन भी नहीं है दैट इट शुड पास थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स A। आई जस्ट वांट दैट इट शुड बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। So if I draw a straight line which is perpendicular to side BC and bisecting the side BC in two equal parts, then it is called as a perpendicular bisector। perpendicular bisector। तो जैसे साइड BC का आ सकता है उसी तरीके से साइड AC का भी आ सकता है एंड साइड AB का भी आ सकता है। क्या बुरा किया इन दोनों ने, राइट? उसी तरीके से साइड AC एंड साइड AB के भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ सकते हैं। उन्होंने क्या गलती किया? तो these points are D, E and F. All the three bisectors are perpendicular at the respective midpoints. करेक्ट? अभी ये पॉइंट को बोला जाता है the point of intersection of perpendicular bisectors is always called as the circumcenter। और क्यों circumcenter बोला जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। circum, this is a center of a circle. Which circle? Which circumscribes the triangle? Which circumscribes the triangle?
That's why it is called as a circumcircle. मतलब, what do you mean by circumscribe? If I draw the radius from point O on point A, on point C, on point B, on point C, and on point A, then surprisingly, the distance between OA is equal to the distance between OB is equal to the distance between OC, जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं सर्कम रेडियस। और अगर आप ये सेंटर पकड़ के एक सर्कल निकालते हो, अभी मेरा ट्रायंगल ही ठीक से नहीं आता है, तो सर्कल के लिए तो मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज सॉरी फॉर दैट। समझ लेना, ये जो फिगर बनी है वो सर्कल बना है। तो अगर ये रेडियस सेम आता है तो द सर्कल विच आई ड्रॉ कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज सेंटर एंड दिस डिस्टेंस एज अ रेडियस, देन इट विल पास थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। It will comfortably pass through all the three vertices of a triangle, and that's why it is called as a circumcenter. And the circle which circumscribes the triangle is called as the circumcircle. And the radius which is involved with this is called as a circumradius. Okay, ये हो गया मेरा basics of circumcenter and perpendicular bisector. ओके इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज है एरिया के एंड अदर फॉर पॉइंट्स व्हिच आर वेरी मच रिलेटेड टू, व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द various exams, various entrance exams and other graduation level entrance exams, जिसके लिए जो बहुत ज्यादा डिटेल में पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा थ्योरी लगती है, वो हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, these are the basic concepts which you are expected to know before you appear for our class. That's why हमने basic session रिकॉर्ड किया है। Moving forward to the last point of a triangle, angle bisector and incentre. इसके लिए फिर से एक छोटा सा ट्रायंगल अज्यूम करो ऑफ एनी टाइप। अगेन फिर से एबीसी से तो हमें भी शादी करनी है, इसलिए हमेशा हम लोग एबीसी ही यूज करेंगे। ठीक है, अभी जैसे तीन एंगल्स आते हैं, तीन साइड्स आती है, तीन वर्टाइसेस आते हैं, तो साइड का अगर बाइसेक्टर हो सकता है तो एंगल का क्यों नहीं हो सकता? राइट, if I bisect angle B, I will get the angle bisector BD. If I bisect angle A, I will get the angle bisector A. Sorry, BD नहीं करते, हाँ छोटे छोटे सिंपल नॉमेनक्लेचर रखते हैं हमेशा से, इधर A D B E एंड अभी ये हो जाता है थर्ड वाला तकलीफ का काम। And CF. Assume that all these three are angle bisectors of the respective angle, and they are again passing through the same point of intersection, which is called as an incentre. Point of intersection of all the three angle bisectors of a triangle is called as incentre, and there is again a reason behind this point being named as incentre, because now if I draw a perpendicular from this point O on any side, if I draw perpendicular from this point O on any side, let us say this is P, let us say this is Q, अभी आपको दिखने के लिए नहीं दिखेगा, लेकिन वो practically OP, distance between OP is equal to distance between OQ is equal to distance between OR is equal to small r, which is usually called as in radius. Why? Because if I draw a circle intersecting all these 3 points, taking this point O as the center, there will be a circle which is just tangent to all these 3 sides of a triangle. It will just touch the sides of a triangle at one point, and that's why all these 3 sides are also called as tangent to the circle. And since this circle completely or partially lies inside the triangle, it is called as the incircle. It is called as the incircle. It always lies completely inside the circle. ओके, और जिसका इसका रेडियस को नाम कहा जाता है इन रेडियस, इसके रेडियस को नाम कहा जाता है इन रेडियस। बहुत सिंपल है।
ओके, बहुत ज्यादा दिक्कत का काम नहीं है। अभी जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर देख ही लिया है, तो एंगल बाइसेक्टर की छोटी सी प्रॉपर्टी भी है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। इफ अगेन जो बहुत सारे ट्रायंगल, पहले मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, वो डायग्राम निकालने में मजा आता है। सो दिस इज ट्रायंगल ए बी सी डी. Let us assume this is angle bisector of angle BAC as AD. Here, the angle bisector will always divide the side, will always divide the opposite side, BD and CD, in the ratio of the adjacent sides, AB and AC. BD upon CD is equals to AB upon AC. It is called as an angle bisector. ओके इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ एरियाज के प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एरियाज के थ्योरम से जो हम लोग एक्चुअल रेगुलर क्लास में सीखेंगे. ओके, now moving forward to the properties of equilateral triangle. These are very important properties of an equilateral triangle which you must know before coming to our regular class. So equilateral triangle, फिर से good definition wise, what is an equilateral triangle? A triangle which has all the three sides and three angles equal. All the three angles will measure up to 60 degrees and all the three sides are measuring x units for triangle A, B, C. So surprisingly बोलो या coincidentally बोलो, क्या होता है पता है? इसका median is equal to इसका median, इसका altitude, इसका परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर एंड हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर. ओनली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल सब कुछ सेम होता है. जैसे मैंने ये लाइन निकाला, सेगमेंट निकाला AD, ये यहाँ पे आके परपेंडिकुलर गिरेगा, ये यहाँ पे आके मीडियन भी बनेगा, ये 60 डिग्री को 30 में डिवाइड भी करेगा एंड ये साइड BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करेगा. तो ये the same segment is median as well as altitude as well as perpendicular bisector as well as angle bisector. अभी ये सिर्फ एक साइड के लिए एप्लीकेबल रहेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, ये सब तीनों साइड्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा. एंड इसी का मतलब है कि फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड is nothing but orthocenter, is nothing but circumcenter, is nothing but incenter. करेक्ट. तो यही सेंटर से आपका सर्कल भी निकलेगा, यही सेंटर से आपका इन सर्कल भी निकलेगा, यही सेंटर को आप ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड भी कहोगे. तो area of any triangle is equals to 1/2 into base into height. Now if I assume triangle ADC as a right angle triangle, which is a right angle triangle, I need not assume. So this is 60 degrees, this is 90 degrees, so this will become 30 degrees, this will become 30 degrees. And if you remember the basic rules of trigonometry which you learned in the school days, then side opposite to 60 degree, side opposite to 60 degree, which is height in this case, is always √3/2 into side of the triangle, which is always equal to √3/2 into side of a triangle. Correct? Which is altitude, which is also altitude in this case, in the case of an equilateral triangle. So here the area of a triangle becomes 1/2 into base is nothing but side of a triangle multiplied by √3/2 into side of the triangle, which is nothing but area of an equilateral triangle is equals to side square multiplied by √3/4. Side square multiplied by √3/4. इसके साथ साथ जैसे आपको पता है that this is a point which is centroid, so this will divide the circle, this will divide the median in the ratio 2:1. But जैसे आपको पता है this is also the circumcenter and incenter, so the two side जो है, two part वाला जो side है median का, this will become circumradius and one part वाला जो side है वो बनेगा inradius. That means circumradius is equals to 2 times of inradius. That means circumradius is equals to 2 times of inradius. Correct?
which is also equal to altitude, ये क्या हो गया अभी altitude मेरा 2 by, this is also equal to 2 by 3 of the altitude or height of the triangle, which is equals to 2 by 3 multiplied by root 3 by 2 multiplied by side of the triangle, which is equals to circumradius equals to side upon root 3. Side circumradius equals to side upon root 3 and in radius equals to side upon 2 root 3 and in radius equals to side upon 2 root 3. करेक्ट. तो इन्हीं के साथ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. दैट एरिया ऑफ अ triangle using the circumradius is equals to multiplication of all the three sides divided by 4 into circumradius. Area of a triangle equals to ABC divided by 4 into circumradius, and as for in radius area of a triangle is equals to R into side of a triangle, R into semi perimeter of a triangle, R into semi perimeter of a triangle, where semi perimeter equals to addition of all the three sides of a triangle divided by 2. पेरिमीटर मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो सेमी पेरिमीटर मतलब क्या होगा? उसका एग्जैक्ट हाफ. करेक्ट. इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बाकी के प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है जो बहुत हर एग्जाम में नहीं इंपॉर्टेंट है, तो हायर लेवल एग्जाम्स के सेशंस में हम लोग आपको जरूर पढ़ाएंगे. बट ये बेसिक प्रॉपर्टी जो है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है बिफोर यू कम टू द सेशन. Similarly, there is one more type of a triangle which is right angle triangle based on the angles. So this is called as the right angle. This is how it looks. Any one of the three angles is equals to 90 degree, and using the Pythagoras theorem I get a square plus b square equal to c square. Correct. So यहाँ पे हमेशा याद रखना that altitude on the hypotenuse. Altitude माने क्या? A perpendicular drawn from any vertex to the opposite side. So this is nothing but the altitude on the hypotenuse. Altitude on the hypotenuse is always equal to multiplication of the two sides divided by the hypotenuse. Multiplication of the two sides divided by the hypotenuse. Correct. Then right angle triangle is always enclosed in a semicircle. ये मैं सर्कल के बेसिक सेशंस में आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी. देन इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट midpoint of the hypotenuse is equidistant from all the three vertices. क्यों? सिंपल रीजन इसका, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप मिड पॉइंट निकाल, अब ये इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल रहे, स्केलिन ट्रायंगल रहे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहे, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहे, आइसोसेलेस ट्रायंगल रहे या एक्विटेंगल ट्रायंगल रहे, हर एक ट्रायंगल को सर्कमसेंटर तो होता ही है. तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द सर्कमसेंटर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट. सर्कमसेंटर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट. ये हमेशा ध्यान में रखना. क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट जैसे मैंने निकाला और यहाँ से अगर मैं सर्कल निकालना चाहूँ तो वो तो ये दो पॉइंट से, इफ आई अज्यूम द हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द रेडियस, इफ आई अज्यूम दैट हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द रेडियस. एक सेकंड गाइस, देयर इज सम एरर इन द पीपीटी, लेट मी जस्ट चेक इट. ओके. एंगल बाइसेक्टर वगैरह तो बता प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना. हाँ, सो क्या होता है कि लेट अस से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल. तो यहाँ से अगर मैं सर्कल निकालूं, दिस इज सर्कम रेडियस, दिस इज सर्कल रेडियस, तो ऑब्वियसली वो सर्कल आपका तीनों वर्टाइसेस से पास होना चाहिए. इसकी वजह से ये भी लेंथ आपका r ही होता है.
Okay, it is always r equals to half of the hypotenuse, करेक्ट। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला और भी है, दैट इन रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ टू साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। इन रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ टू साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। ये बेसिक फॉर्मूला है, ये रट्टा मार के रखो, इसका एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो हम लोग क्लास में बताते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, then if I have drawn, let us say this is an this is a right angle triangle which is in which I have drawn an altitude on the hypotenuse. I have drawn an altitude on the hypotenuse which is dividing the hypotenuse in the ratio x and y, which is dividing the hypotenuse in the parts x and y. Then in this case h square equals to x into y. In this case h square equals to x into y. Okay. Okay, now moving forward to some last basic sessions of the triangles, जो आपको पता, basic properties of a triangle जो आपको पता होना जरूरी है before you attend a classroom or online session. So test of congruency. Any two triangles are said to be congruent. Any two triangles are said to be congruent if they have all the three angles equal, all the three angles and all the three sides exactly equal. All the three angles and all the three sides exactly equal, then and only then all the both the triangles are said to be congruent. लेकिन किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए कुछ टेस्ट होती है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल एंड राइट हैंड साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, वो दोनों साइड्स के बीच का एंगल, जैसे ये दो साइड्स इक्वल है विद दीस टू साइड्स एंड इनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट थर्ड साइड एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी इक्वल एंड द टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट ऑल द थ्री एंगल्स विल बी इक्वल एंड those two triangles are congruent. ये scalene, isosceles, equilateral, acute, obtuse, right angle कोई भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई भी दो एंगल्स, उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है वो अगर इक्वल है, then those two triangles are always congruent. कोई भी दो एंगल है, वो दोनों एंगल के बीच की जो साइड है वो इक्वल चाहिए। सिमिलरली राइट हैंड साइड मतलब जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपने बनाए हैं उनका अगर हाइपोटेनियस इक्वल है तो हाइपोटेनियस के अपोजिट का एक एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल हो जाता है, तो बचे हुए दो साइड एंड दो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये लिख लो मेरे से, वो होता है राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी। उनके साथ साथ कुछ ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे टू ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर, मतलब एक ट्रायंगल छोटा है एक ट्रायंगल बड़ा है, लेकिन उन दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स रिस्पेक्टिवली इक्वल है, x इक्वल टू x, y इक्वल टू y एंड z इक्वल टू z। भले ये एंगल, ये ट्रायंगल की साइड्स a b c है, ये ट्रायंगल की साइड्स d e f है, still these two triangles are said to be similar triangles because the ratio of the sides a by d is equal to ratio of the sides b by e is equal to ratio of the sides c by f. That's why these two triangles are always said to be similar triangles. ये आइडेंटिफाई करने की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया that if all the three angles of a triangle of two triangles are equal, then remaining three sides must be in a ratio. Or side angle side, if any two sides of the triangle are in a ratio and the angle between those two sides, जैसे any two sides of two triangles are in a ratio and angle between those two sides is congruent, then those two triangles are similar to each other. Similarly, if all the three sides of a triangle bear common ratio with the respective three sides of another triangle, I repeat myself, if all the three sides of triangle 1 bear common ratio with respective three sides of a triangle 2, then those two triangles are said to be similar. Correct? Those two triangles are said to be similar. फिर जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, उनकी
कुछ प्रॉपर्टीज आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिस प्रकार रेशियो ऑफ देयर the areas of similar triangles. जैसे I am saying that triangle 1 and triangle 2 are similar. Then area of triangle 1 upon area of triangle 2. The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding medians, ratio of the squares of their corresponding medians, ratio of the squares of corresponding medians. मतलब देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, आपको दिखने में ही दिख रहा है कि ए बी सी डी ई एफ से थोड़ा बड़ा है, लेकिन तीनों साइड्स का ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हो रहा है। तो ये अगर मैं मीडियन निकालता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, ABC is equal to area of triangle, ratio of the areas of two triangles is equal to AP square divided by BDQ square. Similarly, this property is applicable for all the three medians of both the triangles. Then, ratio of areas of two similar triangles is also equal to ratio of squares of their corresponding altitudes. Squares of corresponding altitudes. If now in this case assume that these two are altitudes, then in this case also the same formula is applicable, and this ratio of areas of two triangles is also equal to the squares of their angle bisectors. So if these two are in this case angle bisectors of the respective angles, then also these properties applicable. So area of two triangles, area of two similar triangles are in the ratio of squares of their medians, squares of their altitude, and squares of their angle bisectors. Correct? Similarly, ratio of the median is also equal to, in the similar triangles, ratio of the medians is equal to the ratio of the altitudes. Altitude 1 upon altitude 2 is equal to the ratio of internal bisectors, ratio of angle bisectors 1 upon angle bisector of triangle 2 is equal to the ratio of corresponding sides, is also equal to the ratio of corresponding sides. जैसे AB upon DE equal to median 1 upon median 2 equal to AP upon DQ equal to angle bisector 1 upon angle bisector 2 equal to altitude 1 upon altitude. इनके अलावा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल, I can draw a line parallel to this side. Let us say this is triangle ABC. I can draw infinite number of lines parallel to line BC, but I am drawing a line which is parallel to side DC, which is BC, which is line DE, and so BC parallel to DE, and it is also intersecting the sides of a triangle ABC. So it is intersecting side AB at point D and AC at point E. So in this case, if we draw a line parallel to third side, then the two sides, then the AD upon BD is equals to AE upon CE. पहली चीज, AD upon BD equals to AE upon CE. दूसरी चीज, AD upon AB is equals to AE upon AC. दूसरी चीज, the sides are, ratio of the sides are equal. Correct? तीसरा, AD upon DE is equals to AB upon BC. These three are very, very important formulas to solve your questions in the higher level exams. Okay, so do remember these formulas, so that you will be able to increase your accuracy and speed.
Now, since we have learned the Pythagoras theorem, we need to learn the how to generate the triplets of a right angle triangle. Correct? How to generate the triplets of a right angle triangle. What is a triplet? जैसे आपको पता है that a square plus b square is always equal to c square. A square plus b square is always equal to c square. There are few sides जैसे 3 square plus 4 square is always equal to 5 square. अब आप इसको कुछ भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, जैसे 3, 4 and 5 will always form a Pythagorean triplet. इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 6, 8 and 10 will form another Pythagorean triplet. इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 9, 12 and 15 will form another Pythagorean triplet. इसको आप ये ट्रिपलेट को बेसिक ट्रिपलेट को आप कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, will always get a Pythagorean triplet. Correct? So if the square of the smallest side, जैसे in this case, if the square of the smallest side is odd, square of the smallest side which is odd, जैसे odd side, smallest side अगर आपकी odd side रहेगी, then आपके Pythagorean triplet कुछ इस प्रकार बनेंगे. आपके Pythagorean triplet कुछ इस प्रकार बनेंगे. A square or 3 square is equals to a plus 1. 3 square is equals to a plus 1. जैसे 3 square is equals to 2 sides बनेगी आपकी a plus 1. कोई भी छोटी साइड जो रहेगी, सबसे छोटी साइड जो अगर ऑड रही आपकी, तो साइड स्क्वायर ऑड साइड, अगर सबसे छोटी साइड आपकी ऑड रही तो ऑड स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 अनदर साइड 2, मतलब साइड जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सॉरी उसका वो प्लस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू दैट साइड प्लस हाइपोटेन्यूज. ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपका बनेगा. ओके जैसे आपने अगर देखा कि 3 स्क्वायर कितना होता है 9, which is equals to 4 plus 5, which is equals to 4 plus 5, and these two sides must be one less or more than each other, one less or more than each other. करेक्ट. जैसे आपको अगर 5 छोटी साइड लेके उसका पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है तो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. 25 के मिड पॉइंट क्या आता है 12 and 13. So 12 and 13 are the two other sides of that Pythagorean triplet. आपको अगर 7 के साथ लेना है तो 7 स्क्वायर क्या होता है 49. इसके दो वैल्यूज ऐसे कौन से आएंगे which will add up to 49, 24 plus 25. So 24 and 25, this is another Pythagorean triplet. 9 के साथ आता है 81. So 40 and 41, this is another Pythagorean triplet. करेक्ट. उसी तरीके से एक इवन साइड अगर रही आपकी तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकालना है. ठीक है, पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट. आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन. Okay guys, so we have gone through the Pythagorean, we have seen how to generate a Pythagorean triplet if the smallest number is odd number. Now if the smallest number is even digit, then how to generate a Pythagorean triplet? So here what you have to do is, let us assume I have to generate a Pythagorean triplet for number 6, which is the smallest number. So going back to the previous method, what you can do is find out the odd number related to this. So I am dividing this 6 by 2 to get 3. I am dividing this 6 by 2 to get 3 and applying the same method again, that 3 square is equals to 9. I am dividing this 9 into such numbers that which will add up to 9, which are the closest numbers. So they are obviously 4 and 5. So I will get 3 square plus 4 square is equals to 5 square. But is this the Pythagorean triplet I am looking for? No, I am looking for a triplet which is starting with the number 6. So the triplet in this case is 3, 4, 5. But I need 6. So how had I got 3 from 6? I divided this 6 by 2. So I'll multiply this 3 by 2 to get 6. Similarly, I will multiply these 4 and 5 by 2 to get the original triplet 6, 8 and 10, right? Now this was a method to find the Pythagorean triplet of few even numbers after dividing those even numbers where you will get an odd number. But now if I say find the Pythagorean triplet for a number starting with 4,
तो अभी अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल नॉट गेट एन ऑड नंबर, राइट? सो ऐसे जगह पे क्या करना है, लेट अस अज्यूम दिस इज एन n. सो इसके 3 नंबर्स आपको इस तरीके से मिलेंगे, एक तो n by 2 होल स्क्वायर माइनस 1 एंड n by 2 होल स्क्वायर प्लस 1. जैसे n is equals to 4, 4 by 2 is 2 square, 4 minus 1 is 3. Okay, n by 2 whole square minus 1, 4 by 2, 2 square minus 1. नहीं, ये नहीं, इसके नहीं लगेगा, sorry, my bad. If I take n equals to 8, if I take n equals to 8, so n by 2 whole square minus 1 is n equals to 8. n by 2 is 8 by 2, 4 square minus 1. So 16 minus 1 would be 15 and 16 plus 1 would be 17. Now, if I take n equals to, all the values of n will be here. n equals to 12, I will get the first value as 12, smallest value. Then next value will be 12 by 2, 6 square. 36 minus 1 would be 35 and 36 plus 1 would be 37. Then the next value is, if I take 16, because if I take 14, I will obviously get the answer. But I'm just trying to take 16. 16 divided by 2, पहला नंबर आएगा 16, then 8 square, 64 minus 1 would be 63 and next number would be 65. करेक्ट? आप इसको सॉल्व करने का दूसरा एक तरीका भी ध्यान में रख सकते हो, that n, then here it will be n by 4 multiplied by n. Correct? n by 4 multiplied by n minus 1 and n by 4 multiplied by n plus 1. It is one and the same thing. n square divided by 4 ही आने वाला है, ये n square divided by 4 ही आने वाला है. Correct? One and the same thing. ठीक है? So this is how we generate a Pythagorean triplet for odd and even numbers. Then there are some basic properties of right angle triangle, that is 45 45 90 and 30 60 90 degree triangle. जैसे 45 45 90 degree triangle, आपको नाम से ही ध्यान में आ रहा होगा that there are two angles. One angle of a triangle is 90 degree because it is a right angle triangle, and other two angles are 45 degree triangle, 45 degree angles. Other two angles are 45 degree angles. So if I name this triangle as triangle ABC, where I know that AC square is equals to AB square plus BC square, but I know that AB is equals to BC. Therefore, it is AB square plus AB square, which is equals to 2AB square. Here, AB is equals to BC because this is an isosceles right angle triangle. So AB square plus AB square equals to this. And if I take a square root on both the sides, I will get hypotenuse equals to root 2 of root 2 times the side. Hypotenuse equals to root 2 times the side. Correct? It is applicable for any side. It is applicable for any side. Root 2 times of BC. Similarly, if I draw another triangle, which is 30, 60, 90 degree triangle. So obviously this is a smaller triangle. This is 90 degree and this is a 60 degree. So here, if the triangle is PQR, if the triangle is PQR, we should know that side opposite to 30 degree, that is PQ, is equals to half of the hypotenuse, and side opposite to 60 degree, that is QR, is equals to root 3 by 2 times the hypotenuse. PQ is equals to half of the hypotenuse and PR is equals to root 3 by 2 times the hypotenuse. Right? Therefore, अगर मैं इसके sides का ratio लेने जाऊँ, P is to PQ is to QR is to PR, PQ is to QR is to PR is equals to 1 to root 3 to 2. ये बहुत important ratio है guys, ये ध्यान में रखना हमेशा हमेशा के लिए. Okay, because this is what going to help you a lot in solving the questions of triangle related to trigonometry and all. Now, there are some basic properties of triangles which you should know. जैसे sum of all the interior angles of a triangle is equals to 180 degree. उसी प्रकार sum of all the exterior angles of a triangle is equals to 360 degree. But first of all, you need to understand what is an exterior angle. If I draw the sides extended outside the triangle, if I draw these two sides extended outside the triangle, I will get a pair of exterior angles which is equals to x, x. Here I'll name them y, y, and here I'll name them z, z.
Please remember, these angles vertically opposite to the interior angles are not the exterior angles. Angles vertically opposite the interior angles, are not the exterior angles. Exterior angle, exterior angle will always have one side of the triangle as an arc. Will always have one side of the triangle as an arc. Correct? One side of triangle as an arc. So exterior sum of all the exterior angles of a triangle is sum of all the exterior angles of a triangle is 360 degrees. Okay, ये एक basic property है, हमेशा ध्यान में रखना. Then one of the exterior angle, जैसे अगर मैं इसको नाम दूं points A, B, C, then A, B, C, D. So any exterior angle, let us say angle ABD is equals to sum of opposite interior angles. जैसे angle BAC plus angle BCA. Any exterior angle is always equal to sum of opposite interior angles. क्यों? समझो ना, सीधी बात है. अगर ये एंगल मैं लेता हूँ, ये एंगल में लेता हूँ डिग्री वाला छोटा, तो this plus x is 180 degree and this plus these two angles is also equal to 180 degree. That means x is also equal to these two angles. Simple. Correct? X is also equal to the sum of opposite interior angles. Pythagoras theorem हमने already देख लिया है. Right? Now बच जाता है midpoint theorem and angle bisector theorem. These two are very important theorems for the triangle, guys. Okay, इसके ऊपर बहुत बार questions आ सकते हैं आपको कोई भी aptitude based exam में, because these are very common theorems, very basic theorems, but बहुत लोगों को पता नहीं होता है just because of the fear factor related to their geometry. So if I draw, yeah, okay. If I draw a triangle, any triangle ABC, this is applicable for any type of a triangle, scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, and acute, obtuse, and right triangle. So if I draw a triangle ABC, taking midpoints of sides AB and AC, and if I try to join them, if I say point D is a midpoint of side AB and point E is the midpoint of side AC, I try to join points B, D, and E. Then line joining the midpoints of the sides of a triangle must be parallel to the third side. Line joining midpoints of two sides of a triangle, must be parallel to the third side. And line joining midpoints of two parallel sides of a triangle is half of the third side. Line joining midpoints of two sides of a triangle is always half of the third side. This is applicable for any two sides. जैसे यहाँ पे अगर मैं अभी ये midpoint आपको join करके दिखाऊँ, this is EF. So in this case, it is EF. In this case, EF is parallel to AB. Also, EF is half of AB. Similarly, DF is parallel to AC. Also, DF is half of AC. DF is half of AC. Okay, and we have already gone through the angle bisector theorem. I just revise it for you again, once again, that if I draw a triangle and if I draw an angle bisector for any angle, let us say angle B, a triangle ABC का angle bisector of angle AB, angle bisector of angle ABC, triangle ABC is BD. So here the vertex from which angle bisector is drawn, उसके दो sides BA and BC is equals to the ratio is equal to the side, the ratio in which the opposite side is divided, that is AD and AC. Okay, so these are some very basic properties of triangle which you are expected to know before attending any high level aptitude based session for the preparation of your aptitude based exam. To know basics about, to know more in detail, let us connect. Till then, best of luck, guys. Thank you very much.